समर्पण का मतलब है तुम कुछ हो ही नहीं, फिर तुम समर्पण भी करो और एक कुर्ते का करोड़ का झटको और मैं मतलब एक ऑफिसर हूं तो तुम्हारा समर्पण नहीं है फिर वो, या तुम बहुत विद्वान हो वो समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब है तुम कुछ नहीं हो, मैं बिल्कुल खाली हूं। अब मेरे पास न पद है, न प्रभुता है, न पैसा है, न धन है, न दौलत है, वो जो कुछ मेरे घर में पड़ा है, यहां पर जो मैं हूं वह बिल्कुल पूर्ण भाव से आपको समर्पित हूं। ये समर्पण। जब ये स्थितियां आती हैं तब उस चैतन्यता से शिष्यता में आता है, तब वो शिष्य बनता है। शुरू में शिष्य नहीं बनता, पहले जिज्ञासु बनता है, फिर चैतन्य बनता है। चैतन्य के तीनों बिंदु उसके जीवन में आते हैं, तीनों बिंदु आते हैं तो शिष्य बनता है। और जो शिष्य बन जाता है, शिष्य का तात्पर्य है, संस्कृत में इसका अर्थ है नजदीक जाना। शिष्य और गुरु के नजदीक जाता है। नजदीक जाने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उसके सीने सीना भिड़ा के खड़े हो जाओ, ये शिष्य का मतलब नहीं है। गुरुजी आपने कहा था, मैं हैदराबाद में गया अभी 4-5 साल पहले की बात है। मैं गुरु पूर्णिमा का अवसर था और मैं गंगोत्री से आ रहा था, उसमें से कई लोग यहाँ होंगे साथ में। वहां एक शिष्य था, उसने बड़ा आयोजन अच्छा किया। उन सब कम से कम 200 शिष्य मेरे साथ में थे। उनको ठहराने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी की। जब हम हैदराबाद में घुसे तो उसने बैंड बाजे लाया, बेचारे ने खूब खुशी मनाई। जिस धर्मशाला में या जिस जगह पर हमें ठहराने की व्यवस्था थी, वो गेट पर वो खड़ा हुआ आरती लगा करके, और उसमें बड़ी बड़ी बत्तियां लगाई थी, मोटी मोटी बत्तियां, रुई की, घी की भरकर की बत्तियां लगाई। और बत्तियां लगाने के बाद जब मैं घुसने लगा, आरती करने लगा, स्वामी गुरु आरती होती है, गुरु की आरती करके उसको अंदर ले, तो मैं भी खड़ा हुआ, मेरी वाइफ भी साथ में थी, पीछे से भी थे। अब वो ठेठ आरती लाते लाते ठेठ यहाँ तक ले आए। अब मैं मुंह नीचे करो, ठेठ और लाया, मैं और मैं अब पीछे तो गर्दन अब कितनी जाएगी ठेठ। अब मैं संकोच के मारे, और उनके भी बेचारे भाई बहन सब मंदिर से आए। मैं अभी कुछ कहूंगा तो इसको बुरा लगेगा, मैं कहा नहीं कहूंगा, अब मेरे बाल जलेंगे, अब मैं महान बन जाऊंगा। तो मैं और ये पीछे करता हूँ और पीछे, जय गुरुदेव दया निधि। अब मैं दया निधि नहीं, अब तो अस्पताल निधि हो जाएगा। तो मैं हाथ से उसकी आरती को, तो ये क्या? अरे मैंने कहा भाई आरती क्यों नहीं करती ऐसा, आप कब गवाते हैं? मैंने कहा एक बार आया तो फंस गया, इसका मतलब ये थोड़ा तो मुझे सीधा यहाँ अस्पताल घर ही पहुंचा दो। मैंने तुम दूर से आरती करो। नहीं गुरुजी, बार बार थोड़ी होता है ऐसा, मौका बार बार थोड़ी आता है, आज ही आया। और वो आरती नजदीक आया, उसकी लपट मेरे लगे, वो दयानिधि ने हितकारी, वो बहुत मुश्किल से पूरी हुई। तब तक मेरा शरीर, वो चेहरा लाल सुर्ख ऐसा हो गया। मैंने भाई बेचारी घबराई, सोचा कुछ हो गया गड़बड़। वो मेरे तो ताके, मेरे हाथ से टल्ला मारे। तुम टल्ला मारे, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ यहाँ शिष्यों के बीच में। अब वो दिन हितकारी तो हो गया, तो ये हितकारी हो, कोई भला करे, मेरा तो मर्जी, इनकी बातें। तो शिष्य का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे मेरे नजदीक आके, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल कल आके सीने से भिड़ करके खड़े हो जाओ तो लो गुरुजी आपने कहा नजदीक जाना, आ गया मैं आपको। मेरी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया है। आप हृदय से जुड़े, नजदीक आने का शिष्य का मतलब है। फिर जब 30 स्टेज में शिष्य होता है, वो फिर नजदीक आता है। नजदीक आने का मतलब ये होता है कि फिर उसका चिंतन खुद का कुछ नहीं होता, फिर उसमें कुछ प्रश्न भी नहीं होते, फिर ये भी चिंतन नहीं होता कि 8 मास का आदमी है, एक देवता है कि क्या है। उसके जीवन में ये सब कुछ है, गुरु है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, यही सब कुछ है। तब वो जब चरण छूता है, तब उसको चमड़ी नहीं दिखाई देती, उनको हरिद्वार दिखाई देता है, उनको मथुरा दिखाई देता है, फिर उनको वो चरणों में काशी दिखाई देता है। तब दिखाई देता है, जब वो शिष्य बनता है, तब उसकी आंखें आंसू से भीगती हैं, तब वो अपने आप को समर्पण करने की पूरी क्रिया बनता है। और जब ऐसा करता है तो जो गुरु के पास है सब कुछ उसमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ कोई टेक एंड गिव वाला मामला नहीं है कि मैं मतलब जेब से निकाल करके कुछ दूं। गुरु प्राणों में स्थापन होने की क्रिया का मतलब है कि आप उनके नजदीक इतने चले जाए, उनके प्राण तुम्हारे प्राण एक हो जाए, उनकी देह तुम्हारी देह एक हो जाए। एक ही चिंतन रहे कि मैं कैसे इनको सुख पहुंचाऊं, क्योंकि ये शरीर मेरा है, ये जो गुरु का शरीर है ये मेरा ही शरीर है। अब गुरु के कांटा चुभता है और तुम्हें अपने दर्द होने लग जाए, सारी रात तुम तड़फो, जब मैं खाना नहीं खाऊं मान लो, और तुम्हें मतलब सारी रात छटपटाहट महसूस हो, और एहसास करो कि अपने घर में क्यों छटपटाहट है, कोई तकलीफ तो है नहीं, मगर क्या बात है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर। अब क्या गड़बड़ है ये तब हो सकता है जब तुम्हारे मेरे प्राण जुड़ेंगे। ये तब जुड़ेंगे जब तुम शिष्य बन सकोगे, जो तुम्हारी आंखों में एक भाव होगा। Devotion means that you are nothing. It won't do if you say that you are devoted and then feel proud that you are an officer or you are such a great scholar. This is not devotion. Devotion means you are nothing at all, that you are empty, that you have no position, no fame, no money, no power, no wealth, and nothing. Whatever you do have in material terms is at your home.
Here in the feet of the Guru, you are fully devoted. And when a person reaches this stage, he becomes a true disciple. He is not a disciple from the beginning. First, he is just a curious person, then he becomes enlightened, and after adopting the three principles, service, sacrifice, and devotion, he becomes a disciple. Disciple in Sanskrit is Shishya, and it means to come closer. The disciple always comes closer to the Guru. This does not mean that he should go and embrace the Guru. This is not what I mean by coming closer. About 4 to 5 years back, when I was returning from Gangotri, there was this disciple who made very good arrangements for the 200 disciples who were with me. He arranged for their stay and their food. I promised to visit his house in Hyderabad. When I reached Hyderabad, he had hired a musical band and was feeling very happy. He had arranged for us to stay in a guest house, and on the gate of the place he stood with a plate containing a dozen lighted earthen lamps for Aarathi. When I reached the gate, he started the Aarathi. I stood there with my wife and some other disciples as he performed the ceremony. While performing the Aarathi, he came closer and closer, and soon the flames from the dozen lamps were hardly an inch or two from my face. I turned my face, and he came even closer. I strained my neck backwards to its limits. Still the intense heat reached me. I hesitated to say anything to him, as all his relatives, friends stood nearby. I thought, if I say something, he will feel hurt, and if I don't, my brows and hair will burn. I moved a step backward, and he moved still closer. O Gurudev, thou art an ocean of kindness, he sang as he performed the Aarathi, and I said to myself that soon this ocean of kindness shall end up on a bed in some hospital. I extended my hand to stop the Aarathi, but he said, Guruji, it is rarely that we get a chance. I said to myself, you have got a chance and I am stuck up. This does not mean that you send me straight to a hospital. To him I said, perform Aarathi from a distance. He said, Guruji, such occasions do not present themselves again and again. Today we have at last got a chance. And speaking these words, he came still closer to me. The intense heat almost scorched my face, and it seemed as if ages had passed when the Aarathi finally concluded. Till then, my face had become red like a hot iron. My poor wife became overtly anxious at my sorry state. She kept looking at me and with inquiring eyes, as if saying, what is all this? I said to her, what can I do? Today I am caught up amongst my disciples. I have always been kind to them. Now it is up to them whether they shower me with their kindness or not. Shishya does not mean that you come and ram into me and then say that I had asked you to come closer. Believe me, for coming closer, it's not necessary for you to break my bones. Coming close means becoming one with my soul, forming a bond with my soul and with my heart. When the disciple reaches the third stage, he comes closer to the Guru. Coming closer means that even his thoughts are not his own. In this state, there remains no questions in his mind. Then he does not even think whether the Guru is an ordinary man of flesh and blood or he is a god. He only thinks that he is his Guru and his Guru is everything for him. When his thinking transforms in this manner and when he touches the feet of the Guru, he realizes divinity in those holy feet. When this happens, his eyes fill up with tears of joy, and thus the disciple learns
how to devote himself fully. When he becomes fully devoted, he obtains everything from the Guru. In this relation of Guru and disciple, there is no give and take. Establishing yourself in the soul of the Guru means getting closer to him so that your soul and his soul fuse to become one, and even your physical form becomes one with that of the Guru. All the time, only one thought should remain in your mind, and that is how to make the Guru happy, because then the body of the Guru becomes your own. And if a thorn pricks the feet of your Guru, you feel the pain, you feel restless. You shall not be in distress, but shall still experience restlessness. Then you shall know that something is wrong. This shall happen only when your soul fuses with mine and becomes one with it. They shall become one when you become a disciple, when you devote yourself.